આગળ વધીએ આપણી સાથે कैनफिन होम्सના एमडी અને સાથે જ सीईओ गिरीश कौसगी जोड़ाई चुक्या है। गिरीश सर, शुक्रिया मेरे साथ आज जुड़ने के लिए। सबसे पहले तो वेरी गुड आफ्टरनून। शुरुआत इसी से करते हैं, किस तरीके से डिमांड वर्कआउट होते हुए आप देख रहे हैं? क्योंकि पिछली बार हम लोग बातचीत कर रहे थे, आपने बताया था डिस्पोजल्स काफ़ी बेहतरीन यहाँ से ट्रेंड बता रहे हैं और जो काइंड ऑफ ग्रोथ दिख रहा है वो भी काफ़ी एक्सेप्शनल है। एक आइडिया अब तक के अपडेट्स के ऊपर आगे बातचीत करें उससे पहले। थैंक यू। डिमांड लास्ट अक्टूबर से बहुत अच्छा है। अक्टूबर कोविड फर्स्ट वेव के बाद फर्स्ट क्वार्टर सेकंड क्वार्टर थोड़ा डाउन था। अक्टूबर नवंबर से बहुत अच्छा है डिमांड। अप्रैल में थोड़ा कम हो गया कोविड सेकंड वेव की वजह से। उसके बाद बहुत अच्छा डिमांड है। हम लोग लास्ट ईयर क्वार्टर 4 ऑल टाइम हाई डिसबर्समेंट्स किया। उसके बाद क्वार्टर 2 ऑफ दिस ईयर अच्छे नंबर्स किया, विच वाज अगेन ऑल टाइम हाई। क्वार्टर 4 का बीट किया क्वार्टर 2 में, और दिस क्वार्टर भी बहुत अच्छा है। सो दिस क्वार्टर और अगले क्वार्टर 2 का एवरेज के ऊपर डिसबर्समेंट होगा। सो डिमांड बहुत अच्छा है। डिमांड सब जगह से आ रहे हैं, अक्रॉस ऑल सेगमेंट्स, अक्रॉस ऑल ज्योग्राफीज। नेक्स्ट 4 to 5 years डिमांड बहुत बहुत अच्छा रहेगा। एंड ऑल्सो रियल एस्टेट एज अ स्पेस हैज रिवाइव्ड and it will stay for another 5 to 6 years. So affordability is very in terms of the rates it's very low, and therefore high affordability. Property prices बहुत कम है, and home loans का demand बहुत अच्छा है। जो builder segment हो, non builder segment हो, सब जगह से अच्छा demand आ रहा है। ओके, अग्रीड सर। अच्छा, एक आइडिया जो मैं समझना चाह रही थी इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट सिनारियो, क्योंकि जो लेवल्स पे हम लोग इस वक्त देख रहे हैं काइंड ऑफ बॉटम्ड आउट है। इसके ऊपर आपकी कमेंट किस तरीके से वर्कआउट हो रहा है? आपने बताया नेक्स्ट 5 to 6 years काफ़ी बेहतरीन दिख रहे हैं, तो एक आउटलुक, क्योंकि आप चीज़ें ज़्यादा बेहतरीन तरीके से देख पा रहे हैं सिस्टम के अंदर, एक आइडिया उसके ऊपर। अभी तक तो रेट्स बहुत कम था। लास्ट टाइम ऑल्सो रिपो रेट्स चेंज नहीं किया, वो अच्छा डिसीजन है, क्योंकि अभी कोविड थर्ड वेव का थोड़ा there was some news about third wave. So repo rates not changing was a good decision, but rates will go up. Maybe in another 1 quarter or 2 quarters, rates will start going up, but it may not go up to very high levels. Maybe I cannot comment on next 5 to 6 years, but at least in next 3 to 4 quarters, rates might go by 0.5 to 0.6%. So which may not be significant. So from rate point of view, I think it will be a good market for at least for next 2-3 years. Property prices are good, demand is good, affordability is as of now very high because of low rates. So बहुत सारा rates increase नहीं होगा। ओके, अग्रीड सर। और रीपेमेंट कंडीशन वो किस तरीके से शेड्यूल अप हो रही है, उसके रिगार्डिंग एक आइडिया, क्योंकि इन टर्म्स ऑफ एनपीएस मैं एक इंडस्ट्री एवरेज समझना चाह रही थी। एसेट क्वालिटी किस तरीके से वर्कआउट होते हुए आप नेक्स्ट 1 year के दौरान देख रहे हैं, क्योंकि अब जो काइंड ऑफ रिलीफ मेजर्स थे वो यहाँ से वापस लिए जाएंगे, वो भी कुछ सुनने में तो आ रहा है। अब तक ऐसा कुछ हुआ नहीं है, बट गिवन दिस कंडीशन के हम लोग अभी हैं, यहाँ से आउटलुक क्या बन रहा है? आरबीआई ने लिक्विडिटी पोजीशन को अश्योर किया। सो जब भी सिस्टम पे when there is funds required, credit required, I think that will be made available by RBI. So I think there is no challenge on liquidity. On rates, I've told that it may not really increase drastically in next few quarters. In terms of NPA, we have seen bad times last year, and even after that, second wave was impacted for a short time in quarter 1. So asset quality for us is quite stable. But there are 2 changes which RBI has announced on November 12th with respect to asset classification. So I think that will have some impact on NBFCs and HFCs. So in terms of tagging, A, B in terms of rollback. So earlier, if an account moves to NPA, you have to collect only 2 EMIs to roll back to SMA2. Now, after the circular, the entire arrears has to be collected. So it will be 4 EMIs against 2. So this is going to be difficult. This is going to be tough. And there are certain segments like MFI, unsecured, small ticket personal loan, two-wheelers, all these customer profiles are not such that they can pay in advance, or maybe even if it is 1 week advance.
And so if you take segments like commercial vehicles, where you have 40 to 45% first time user, so ये पूरा segment थोड़ा दिक्कत तो होगा, and therefore I think there'll be some stress on NPA for NBFCs and HFCs. ओके, अग्रीड सर। और इन टर्म्स ऑफ रिस्ट्रक्चरिंग, उसको लेकर आप आगे किस तरीके से ट्रेंड बन रहा है? As far as Canfin is concerned, our NPA will be very, very stable for next few quarters. The reason for that is for Canfin, the EMI start date is 1st of the month, and therefore, we will not have too much of a challenge in terms of NPA tagging. We will have some challenge in terms of rollback. So we will arrest the flow, and therefore, we'll be able to manage NPA. Now, in terms of restructuring, we have restructured about 650 crores, and we have provided 65 crores. So we expect about 7% to flow to NPA over a period of next 6 quarters. And we also have planned for a recovery from the NPA pool, which is close to about 55 to 60 quarters. So as the net of effect, we will see that asset quality will be stable. So next 4 to 6 quarters for Canfin, whether it is because of restructuring or because of asset classification changes announced by RBI, I think it's going to be pretty stable for Canfin. But of course, industry को थोड़ा दिक्कत तो होगा, NPA थोड़ा बढ़ेगा. ओके, अग्रीड सर। और ये साल क्लोज डाउन करने की अगर बात करते हैं, कैसे दिखेगा? क्योंकि EUM ग्रोथ आपका नियरली 6 to 7 क्वार्टर्स के हाई पर हैं, आप डिमांड काफ़ी बेहतरीन बता रहे हैं मुझे, डिस्पर्सल्स आपके नियरली 5 to 6 क्वार्टर्स के हाईस के ऊपर ऑलरेडी हम लोग विटनेस कर रहे हैं। एक आइडिया इसके ऊपर? डिसबर्समेंट हिस्ट्री में हाई है. So in the last 33 years, Q4 में all time high disbursement किया, which is about 2,000 crores. Q2 में we did 2,208 crores, which was 10% more than Q4, and again all time high. So disbursements, I think every other quarter we will keep topping. So we'll keep doing more than the previous quarter. Now, in terms of growth, we'll be able to grow at about 18-20% in next few years.